my YouTube channel, that is my knowledge part, and today we have to discuss regarding one of the parts of speech, that is verb, and in that one, types of verbs. In my previous video we have discussed thoroughly regarding at least 2 or 3 parts of speeches, especially the noun, also the pronoun, and today we have to see regarding types of verbs. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ब है. व्हेन वी गो इन डिटेल एट दैट टाइम वी मस्ट थिंक रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब के भी प्रकार है, क्रियापद के प्रकार है, जैसे कि नाउन के प्रकार थे, ठीक उसी तरह प्रीपोजिशन के प्रकार थे. इन द सेम वे हियर आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एंड स्पेशली हियर आई हैव रिटन ऑलरेडी at least 11 types of verbs. Why I have written over here already? Just I have written because my time must be saved and you are supposed to be made understand in good way. That is the intention. वही एक intention है. अब कौन सा है पहले देखेंगे. Action verbs. Second one stative verbs. Third one transitive verb. Fourth one intransitive verb. Fifth one linking verbs. Sixth one helping verbs. Seventh one modal verbs. Eighth one regular verbs. Ninth one irregular verbs. 10th one phrasal verbs. 11th one is infinitives. Now infinitives only what we can say the V1, or it is the main verb, and that supposed to be converted into perfect and participle. Now what is action words or action verbs? Action verbs are used to refer to actions. ये जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब्स कहा जाता है, और वो सेंटेंस के अंदर एक्शन को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं. चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, रोना है, सोना है. What these are the action words, and whenever we use those action words in the sentences, those action words may be declared as a verbs. Now second one, stative verbs. Stative verbs, what it is going to say? These are used to refer conditions or states of being. He is happy, states of being. It is not going to talk regarding the activities, neither regarding the events. Understand? So second one is stative verbs. Third one, what it is? Transitive. What does it transitive? ट्रांजिटिव वर्ब इन सेंटेंस व्हाट इट डज. भाई सेंटेंस के अंदर ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो क्या करता है? इट इज अकम्पनीड. ये किन के साथ आता है? बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया जाता है. एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ द वर्ब्स इन इंग्लिश, then only what happens? Our English become correct, and as well as it gives a good, what we can say, sense of meaning. That is very important. If you have to get a very good sense of meaning, and then what you have to do? We must go through such type of the verbs. Now what is fourth one? It is intransitive. And what is intransitive? It is not used with a direct object. Transitive is used with a direct object. Intransitive is not used with a direct object. जब भी कब हम एक एक वर्ब के बारे में जो स्टडी करेंगे उस वक्त ट्रांजिटिव वर्ब कैसे यूज किया जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे यूज किया जाता है, स्टेटिव वर्ब्स कैसे यूज किया जाता है, या लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, व्हाट इज मॉडल वर्ब्स, सॉरी व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स, व्हाट आर द रेगुलर वर्ब्स, व्हाट आर द इरेगुलर वर्ब्स, what are the phrasal verbs, and what are the infinitives, that we have to discuss in very careful way and as well as thoroughly. But till to come to the point, that is what are the types of the modal verbs, what are the types of the verbs and how they are going to use the sentences. सेंटेंस के अंदर किस तरह से ये वर्ब जो है यूज किए जाते हैं, और क्रियापद के कितने प्रकार है. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं, ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं इधर 11. अंडरस्टैंड? 11 वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर. सो वन इज एक्शन वर्ब्स, सेकंड वन इज स्टेटिव वर्ब्स, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव,
fourth one intransitive, and fifth one it is linking verbs. लिंक करते हो, कैसे लिंक कर रहे हो बाबा? जुलाने का काम करते हैं वो. अंडरस्टैंड कैसे है? लिंकिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू लिंक एज अ सब्जेक्ट विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जो लिंक किया जाता है उसको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है. अब लिंकिंग वर्ब्स कौन से है, उसके प्रकार कौन से है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिंकिंग वर्ब्स एंड विच आर द लिंकिंग वर्ब्स, we will discuss in detail in next video. But now later on what it is there, helping verbs, or it has been called as an auxiliary. Is, am, was, where, are, these, those, these are the helping verbs and they are going to help to the verbs. वो verbs को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. helping verbs कैसे? they work with other verbs. It means what? I am going. What is I? I is a noun, but am is going to express the meaning of something that is helping. Am converts into is, or am, the another meaning of the am is. In the same way, is there, am is there, are is there, were is there, was is there. What these are? These are none other than the helping verbs, or those have been called as a auxiliary. They work with other verbs. Now seventh one, modal verbs. Modal verbs have been called as a helping verbs, or what we can say, helping verbs are used to give a sentence a specific mood. Modal verbs क्या करते हैं? ये modal verbs एक specific mood के बारे में बताते हैं. कई में सेंटेंस के अंदर स्पेसिफिक मूड जो होता है सेंटेंस का, उसके बारे में बताते हैं. कौन से वर्ब्स बताते हैं? मॉडल वर्ब्स. अब ये रेगुलर वर्ब्स है बाबा. रेगुलर वर्ब्स क्या है? रेगुलर वर्ब्स इट्स अ पास्ट टेंस फॉर्म and always they are going to occur, either it is in ed manner, either it is in d manner, either it is in t manner. How it is? work, worked, learn, learned, understand, or what we can say ed, d or t. So what these are? These are regular verbs. Already it is saying, क्या बोलता है ये? रेगुलर वर्ब्स एक ऐसे वर्ब्स है पास्ट टेंस फॉर्म. वर्ब्स का पास्ट टेंस फॉर्म को रेगुलर वर्ब्स कहा गया है. कौन से? वर्क, वर्कड, लुक, लुकड, टॉक, टॉकड, अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट व्हाट इट इज देयर? देयर आर मेनी. whenever we are going to use ed to any one of the action words apart from cut, 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 put, set, set, let, read, read, spread, become, run, ran, write, wrote, written. Apart from these, whichever the action words are going to occur in any one of the sentences, if such type of the action words are carrying ed or d or t, such type of the words have been called as a regular verbs. After that, irregular verbs. कभी कभी irregular है, रेगुलर तो हमेशा होता है. irregular क्या है? देखो बा, irregular words past form doesn't end with ed or d or t. उनका जो फॉर्म है पास्ट फॉर्म ed से एंड नहीं होता. neither it ends with d nor it ends with t. तो कैसे होता है? en से होता है. हो सकता है en से, नहीं तो कैसे होगा? take, took, taken, write, wrote, written, bite, beat, bitten. Yes, it is not going to end with d or ed. And such type of the verbs have been declared as a irregular verbs. Understand? In the same way, phrasal verbs. What is phrasal verbs? Phrasal verbs is none other than it is a combinations of a verb with prepositions. Understand? That has been called as a phrasal verbs. How? Try to understand. Phrasal verbs क्या है? Already बता रहा है वो क्या बोल के? Combinations of a verb with prepositions. A combination of a verb with preposition. Shut down. What it is? Combination with prepositions. Set down. In the same way, close up. Understand? Look up. Such type of the words or such type of the, what we can say, the phrasal verbs are always used in any one of the sentences, so that the sentence, whatever the sentence that we are going to write, it gives the good meaning. That is very important. And last one, infinitives. What is infinitives? Infinitives are the main verbs, and after using ed, en or ing to the infinitives,
they are going to convert in the perfect form, participle form. So what these are? These are 11 types of the verbs, and we have to study step by step of each and every verbs. So first of all, only I am, what you can say, glimpsing on the types of the verbs. 11 types of the verbs are there, and how they are used in the sentences, that we have to, what we can say, that we have to study in detail in next video. But what we have just studied today, आज के वीडियो के अंदर हम क्या स्टडी किए हैं? आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही देखे हैं कि वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी क्रियापद के कितने प्रकार है। क्रियापद के क्या 11 प्रकार है, और 11 प्रकार कौन से हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताया हूं। अब वो कैसे यूज करना, उनका डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर दी व्हाट वी कैन से एक्शन वर्ब्स, व्हाट आर द स्टेटिव वर्ब्स, व्हाट आर द intransitive verbs, what are the intransitive verbs, what are the linking verbs, what are the helping verbs, also what are the modal verbs, what are the regular verbs, what are the irregular verbs, what are the phrasal verbs, and what are the infinitives. We will discuss in next video. Till then, take care. If you like my channel, so please like it. Do not forget to subscribe it and share it. Till then, take care. Goodbye.